We're looking at Prime Minister while addressing a rally in Bengal's Jayanagar went all guns blazing. Prime Minister, in an unsparing attack on Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, called out the alleged loot raj that has now become prevalent in the TMC regime. Let's take a listen. Didi! Oh, Didi! As she defends her title today in Nandigram, the Prime Minister has launched the most high-pitched assault on the Chief Minister of Bengal. Prime Minister Modi descended on Bengal's Jayanagar today to unleash a non-stop series of salvos at the Chief Minister. From her Hinduism to alleged loot raj, to her attacks on the BJP, this was Modi in top gear. धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल दीदी. He was responding to this pitch from Mamata Banerjee in Sonachura. Latching on to the cool, the Prime Minister took his attack to the next level. तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल. He then went on to deride Team Mamata's many recent attacks on the BJP, including the fallout of her Gotra declaration. ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है. अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं. Then the Prime Minister took up the politics over his Bangladesh visit. मैं बांग्लादेश गया था, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है. मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? हरिचंद ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं. हम अपनी आस्था, अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं. Right after that, the PM then turned his guns on what he called loot raj under Mamata. अम्फान साइक्लोन के समय आप लोगों की मदद करने के बजाय इन लोगों ने आपको ही लूट लिया. इसी लूट का दूसरा नाम है खेला होबे. Repeatedly firing the cut money bullet on the Trinamool Sarkar. होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, अस्पताल में एडमिशन हो, हर जगह कट मनी, कट मनी, कट मनी. दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया. Slipping into Bangla, which he has been practicing, the Prime Minister issues Mamata an ultimatum, with 6 phases still to go. आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं. Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Violation of the conduct of election rules. And he ended with a promise for the Bengal result. जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. Today goes down as easily the most high voltage day of 2021's most ferocious election. রবি ঠাকুর ঠিকই বলছেন, নাই ভয়, হবে জয়. With 6 phases to go,
the battlefield just got a whole more fiery. Bureau Report, India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.